गुड मॉर्निंग इंडिया। नमस्कार दोस्तों, भारत में सुबह हो चुकी है और मैं वेलिंगटन पहुंच चुका हूं। टीम इंडिया का प्रैक्टिस सेशन आज था, उसके बारे में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैंने सोचा कि सबसे पहले आपको कोच वीवीएस लक्ष्मण की वो बातें सुना दूं, एक्सक्लूसिव बातें। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वीवीएस लक्ष्मण, बहुत ज़्यादा लोग थे नहीं, इंडिया से तो खैर कोई नहीं था, कोई भी पत्रकार नहीं था, न्यूजीलैंड के एक दो लोग थे और आपका रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर था। और जो आप सबों के दिलों में ये सवाल कि भाई टॉप ऑर्डर को लेकर आप लोगों को लग रहा था मैं पूछता नहीं सवाल, वीवीएस लक्ष्मण को सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने एक तरह से देखा जाए वही सवाल किए। तीखे सवाल थे लेकिन गरिमा वाले अंदाज में, क्योंकि बड़े खिलाड़ी हैं। और आप खुद जज कीजिएगा मेरे सवाल से कि क्या वो सवाल सही थे या नहीं थे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि सॉफ्ट है। मैंने उनसे साफ पूछा कि भारत के खेल को लेकर, भारत के अप्रोच को लेकर बड़ी क्रिटिसिज्म हुई है, उसके बारे में क्या सोचते हैं, नई शुरुआत कितना आसान या मुश्किल रहेगा। तो सुनिए सबसे बड़े वीवीएस के वो जवाब। Guys, we have with us our head coach Mr. VVS Laxman. If you wish to ask a question, please raise your hands. And if you wish to ask a follow-up question, we'll come back to you. We'll take one question at a time. Yeah, who want to go first? वीवीएस सर, विमल कुमार इंडिया से। सबसे पहला सवाल, आप जब आए नया दौरा और बहुत सारी जो वर्ल्ड कप में हुआ, जो एक कॉमन क्वेश्चन हर किसी के दिमाग में और इंडिया में चर्चा हो रही है, फियरलेस ब्रांड ऑफ क्रिकेट, इंडिया के पास इतने बैट्समैन हैं, हमने उस तरह से बैटिंग नहीं की, मेन टीम नहीं है, मेन खिलाड़ी नहीं है, आप आए हैं नए लड़कों के साथ, इस टीम के साथ आपने बहुत टाइम बिताया है। ऐसे में आपकी थॉट क्या, आप कैसे इस टीम को न्यू डायरेक्शन में, या क्या आपको स्पेसिफिक कुछ डायरेक्शन मिले हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आई थिंक T20 cricket requires to play with freedom, lot of clarity of thought, and whatever time I've spent with these players and watching him over the years also grow into wonderful international players, I think that is their strength. And especially in T20 format, you require to play with that freedom, with that fearless attitude, but at the same time it's important to assess the condition and the situation and play and fulfill the needs of the team. I think it's also important to be flexible, but I think in T20 cricket you require to express yourself, and that's when you will be successful. The way England has played T20 cricket, especially in the World Cup, they have an entirely different philosophy where from 1 to 11 everyone can bat, and they from the very word go they come at you. So do you think the time has come that India or even subcontinental teams have been a little conservative, a time have come to emulate that kind of approach? I think T20 cricket definitely showed us over the years that the more number of multi-dimensional players you have, the better for the team. So you have bowlers who can bat, you have batsmen who can bowl, and I think that's the way forward. It's already been proven in T20 cricket that the more number of bowlers who can bat, will add depth to the batting, and it allows a lot of freedom for the batsmen to go and express themselves. I think that's the need of the format, and I'm sure that the more and more teams will try to get that into their selection process and identify players who are multidimensional. अच्छा, वीवीएस लक्ष्मण से शुरू में मैंने पूछा तो उन्होंने तो जवाब दिए ये सारी बातों को, और उसके बाद वो इंग्लिश में ही दे रहे थे, लेकिन फिर मैंने उनको दोबारा इंसिस्ट किया, हालांकि मौका नहीं मिलता है, 2 बार मुझे शुरू में ही 2-3 सवाल करने का मौका दे दिया गया था। फिर मैंने रिक्वेस्ट की और बीसीसीआई के मीडिया मैनेजर का मैं थैंकफुल हूँ, उन्होंने अलाउ किया। तो मैंने वीवीएस से ख़ास तौर पे पूछा, हिंदी में मैंने उनसे पूछा, और मैंने उनसे कहा कि आप बताइए कि बैटिंग को लेकर और जो टॉप ऑर्डर में चूँकि रोहित, राहुल और केएल नहीं है, नया अप्रोच और इनकी सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुई थी, तो ये नए लड़के आए हैं, इनसे क्या अप्रोच देखने को मिलेगा और आपने क्या बताया? उनका जवाब भी बड़ा दिलचस्प रहा, आप सुनिए। सर, ये चाहेंगे इसका जवाब आप अगर हिंदी में दें। टॉप ऑर्डर को लेकर सबसे ज़्यादा बात हुई थी, अब वो टॉप ऑर्डर नहीं होगा जो अप्रोच था, तो यहाँ पर टॉप ऑर्डर आपके पास एकदम न्यू होगा, तो इसके रिगार्डिंग में क्या आपकी बात हुई है कप्तान से या ओपनर से स्पेसिफिकली? आपको कुछ डिफरेंट करेंगे? नहीं, डिफरेंट नहीं करेंगे। जैसा मैं पहले भी कह चुका हूँ मैं कि
T20 क्रिकेट में निडर होकर बल्लेबाजी करना बहुत ज़रूरी है और लकीली हमारे पास ऐसे बल्लेबाज है जिसके पास वो क्षमता है, जिसके पास वो काबिलियत है जाकर खुद को एक्सप्रेस करने की काबिलियत और माइंडसेट और मानसिकता है। तो यही संदेश मैंने और कैप्टन ने अपने बल्लेबाजों को दिया है कि जाकर निडर होकर बल्लेबाजी करिए, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से, कंडीशंस के हिसाब से आपको आपकी रणनीति को बनाना ज़रूरी है। सो आई थिंक सब एक्सपीरियंस प्लेयर्स है। हाँ, हमारे रेगुलर ओपनर्स नहीं हैं, हमारे रेगुलर टॉप ऑर्डर नहीं है, विराट, रोहित और केएल राहुल, लेकिन जो प्लेयर्स का चयन हुआ है वो भी काफ़ी ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल चुके हैं और T20 क्रिकेट खासकर खेल चुके हैं काफ़ी। लेग स्पिनर कुलदीप और इसको युजवेंद्र को एक साथ देखेंगे? देखिए, प्लेइंग 11 अब तक डिसाइड हुआ नहीं है, तो कल आपको पता चलेगा, लेकिन दोनों जो हम कुलचा बोलते हैं, दे हैव बीन मैच विनर्स फॉर इंडियन टीम एंड दोनों विकेट टेकिंग बॉलर्स है और उसी मानसिकता के साथ उनको गेंदबाजी करना पड़ेगा अगर हमें न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में हराना है तो। Thank you. Thank you. Of the game, beginning of the game. So how do you motivate these youngsters with so much of a relation in 2020s and IPLs to keep track on taking Test cricket as a serious option in future? I think there's no need to motivate, and that's for me, quite a fulfilling experience because working with these youngsters, all of them want to perform at the highest level in red ball format, and that is great. That is great, because yes, there's so much of T20 cricket. Obviously, the temptation of the glamour and adulation a player gets, the recognition a player gets when they play T20 format. But when you talk to each and every individual, you know that they deep down want to be recognized as a good test player. So luckily, as far as the Indian cricketers are concerned, I've never faced that kind of a problem where the players are a little apprehensive playing the longer version of the game and they're focusing too much on T20 format. And here again, I think someone like a Virat Kohli, someone like a Rohit Sharma, the seniors who are role models to these youngsters, when they give importance to test match cricket, automatically it goes without saying that the youngsters want to emulate them. And I think Indian cricket and Indian cricketers give a lot of importance to test match cricket. Obviously, Martin Guptill won't be here in this series. I guess a lot of your players would have played against him, seen him play a lot. So when you've got someone new like Finn Allen in the team, how much extra research do you have to do and how much extra kind of preparation do the bowlers do to bowl at someone relatively new? I think analytics has played a major part in the and it's an evolving part of the game, and when you have so much of data available, and you can strategize for a player with whom you've not played against. So I think it won't be any different, but it's all about executing the plans we have for each and every batsman. New Zealand cricket again is blessed with some exciting youngsters, and Finn is one of those youngsters. But I think analytics is something which we give a lot of importance to. Getting the data and breaking the data and using the data is something which we want to continue to improve. And because of that, I think we are in a good position where we strategize for each and every player, irrespective of whether we played with them or we played against them. Final two questions, really, followed by Will. It is. I Yes. was just wondering about your own playing memories against New Zealand. For that, how you enjoyed touring New Zealand. For me, New Zealand is probably the best place I've ever visited in my playing career. Very fond memories, and it's a great nation where they're passionate about this sport, not only cricket, rugby, and a great place to be here. Great place to be here, and as a cricketer, some great memories, and some not so good memories also. But let's not divulge into not so good memories which we had in 2002. But overall, I think it's been quite memorable whenever I visited New Zealand as a cricketer.